हम इसमें जल्दी ठीक है। अच्छा आप ये पार्ट्स मैंने कट बना दिए, मैंने होगी ठीक है। ये वो फैन जो है ये आगे वाली फ्रंट स्पेस में यहाँ पर होना होगी, जहाँ से वो बटन जो है ना कास्टिंग मिलेगी। और ये पीछे जो है ये जहाँ से एक्सट्रूडर इन करेंगे हम, जहाँ से कास्टिंग करेंगे, यहाँ जिस साइड बटन लगेगी साइड यहाँ पर बेरिंग लगेगा बड़ा 70 मिलीमीटर। इधर हम वो दूसरा टच करेंगे आएंगे और टच करेंगे। ये जो है ना स्क्रू, इसकी फोर्स जो है पीछे होती है, तो इसमें जो है हम टच करेंगे आएंगे। ये आपका स्क्रू है ठीक है, और ये टच करेंगे ठीक है। ये देखो ये वाला ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे ठीक है। ये लगेगा सही है, इसके पीछे जो है ना पॉइंट ये कैम ये पीछे ठीक है। ये जो टच करेंगे यहाँ पर बेरिंग हम सीख लेंगे ताकि उसकी फोर्स पीछे जाने वो सारी इसको लगाएगा ठीक है। और ये इसकी पाइप में यूज करूँ, ये जी का पाइप ठीक है 3.5 मीटर थिकनेस है। और गायस जो है ना ये 3.5 इंच इंटरनल 83 होता है इंटरनल ठीक है। और ये रिबन डाइकोट ठीक है। जो आप ये स्क्रू है ना ये 30 इंच डाइकोट, और पाइप इसलिए मैं ज़्यादा रखूँगा तकरीबन 30 मिनट 30 सेकंड या इसके ऊपर नीचे, क्योंकि मॉडल में थोड़ा सा मटेरियल चाहिए ना पीछे मीटर चाहिए। ये समझ गया, ये समझ करनी है मैंने। ये फ्लैंज ये बनाया इसको ठीक है, मैंने इसकी मशीन की है यहाँ पर इसके ऊपर ये उस पाइप फोटा पीस ये इसके अंदर कॉलर रखिए ताकि जब हम फैन लगाएंगे यहाँ पर ठीक है ये तस्वीर हो जाएगा, प्रॉपर सीट हो जाएगा ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पर प्रॉपर जो है रेडी सोल्यूशन बनाएंगे ठीक है, रेडी लगा के। अभी कल से काम हो गया, आपका लिंक ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, टाइम थोड़ा लगेगा, आपको एक्सपेक्टेशन की और जब आप बता दें मैं किसी से कर देता हूँ ठीक है। ओके।